Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Now let's discuss about this terms. What is MS Access? What is this terms MS Access? Well, as we all know, we have Office. Use this terms MS Office, and we might avoid तीसरी applications, that is MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. So these are three most commonly used, most popularly used MS Office application. And then next is there one that is termed that MS Access. It is fourth most popular software, MS Access. Used applications, MS Access. Will these four applications some other like MS Word, Picture Manager, Paint Manager, fine. Also math tools also used. All these are part MS Office suite. This MS Office suite or a package which comprise of these software. It means MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access. So MS Access is the database component is Microsoft Office suite. It is one of the popular and the most user-friendly RDBMS, Relational Database Management System. We'll here talk about this term RDBMS. RDBMS is a special type of software. RDBMS is term of DBMS where form of tables, and inside one DBMS we can create n tables and we can also interlink these tables. So that is the most important terms RDBMS, and that's why 90% database that are used. So 90% database यूज करते हैं इसको RDBMS को, कहने का मतलब ये है, ठीक है. So basically these are the RDBMS that allow to store the information in the form of multiple correlated tables. Fine. So it means MS Access most popularly used, most user friendly are RDBMS, Relational Database Management System, which allows us to create multiple tables and store them correlated tables बोले हैं ना. Then next is how MS Access is different from MS Excel. इसको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उस समय स्टूडेंट ने इस पर डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट हाउ MS Access is different from MS Excel. ओके, वेल मैं कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, कि मैनुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओनली एक्सप्लेन इन मैनुअली. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टर्म्स. MS Access is different from MS Excel. Okay, it will talk about MS Excel. This is the spreadsheet spreadsheet, and spreadsheet software means it has some tables, and these tables we have rows and columns, first things. And the most important, inside this we create workbook, and in workbook we can have multiple sheet like sheet 1, sheet 2, sheet 3 up to sheet n तक. ओके, होता है एक्सेल में, देखा होगा आपने. फाइन. इट मीन्स in one workbook we have multiple tables and the extension is .xls or XLSX. okay, fine.
these are the file extension. Okay, well, if you talk about MS Excel, sorry, it will talk about MS Excel, not a MS Access. Okay, this is the spreadsheet software. There we have table like structure, but we cannot design your table. Fine, in MS Excel we cannot design your table. It means we cannot fix these columns and rows in your table. Every time you have typed some things, then data will be accepted without any problems. But in MS Access, things are different. The thing is, first thing is RDBMS, Relational Database Management, that makes it vast. In MS Excel, we have no limitation of row and columns, like we cannot fill 1 million or 2 million data. But in MS Access, we can write as many record. जब तक का डिवाइस है, जब तक का मेमोरी है, तब तक आप डेटा को उसमें इंटर कर सकते हैं. बट एक्सेल में ऐसा नहीं है हमारे. सो MS एक्सेल में डेटा हमारा जब तक की मेमोरी है, जब तक का वो है, मतलब सिस्टम है, मेमोरी है, स्पेस है, तो डेटा फिल होता रहेगा. यही कहलाता है वास्ट. ओके, सो इट इज़ वेरी वास्ट. फर्स्ट थिंग्स इन MS एक्सेस. ओके, सेकेंड थिंग, the same file can be reused again and again. Then next things, it is accessible. Fine, accessible. No, just let me check the, wait, no, it is shareable. शेयर कर सकते हैं, shareable, not accessible, shareable. शेयर कर सकते हैं, shareable. Okay, फाइन, शेयरेबल आल्सो. शेयरेबल मीन्स डेटा कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को. शेयरेबल मीन्स वी कैन यूज़ डेटा इन मल्टीपल यूज़र. मल्टीपल यूज़र के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं. तो शेयरेबल मतलब ये होता है. ओके, दे कैन ईजली परफॉर्म चेंजेस, एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटाबेस में. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी कैन लिंक इट टू बी एप्लीकेशंस. सपोज आई वाज क्रिएटिंग ए कॉन्टैक्ट ऐप. फाइन, सो आई वाज क्रिएटिंग ए कॉन्टैक्ट इन माई मोबाइल फोन्स. फाइन, फॉर स्टोरिंग कॉन्टैक्ट्स, यूजर्स नेम्स और इंडिविजुअल नेम्स, email addresses, we must need a table or database. So for that we can link that MS Access with the contact. Fine, so the file extension of this is .accdv, and we can create n numbers of tables here. यहाँ पे टेबल की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है. यहाँ पे मल्टीपल रोज़, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं. करोड़ों की नंबरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं और उन सब को हम लोग आपस में ईज़िली मैनेज कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई जनरली यूज़ इट. ओके, फाइन. ओके, सो क्लियर हो गया व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन MS Access एंड MS Excel. ओके, अभी के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.